Yashodanandana Braja Jananandana Atira Vanachari Jaya Govinda Nama Yashodanandana Braja Jananandana Yamuna Tira Hare Rama Hare Rama
Hare Rama Hare Rama Rama Hare 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 Krishna Hare Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare Rama Hare Rama Hare Rama Rama Hare Krishna Hare 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 Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Rama Rama Hare 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 Krishna Hare Krishna Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Jayo Jagannatha Jayo Baladeva Jaya Subhadra Jayo Jagannatha Jayo Baladeva Jaya Subhadra Nityayora Haribol Nityayora Haribol Jaya Jaya Prabhupada Jaya Jaya Prabhupada
Jagannath Baladev Subhadra ki Jai, Panchatattva ki Jai, Sri Sri Gaura Nitai ki Jai, Sri La Prabhupada ki Jai, Tai Gaur Premanande. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Sri Chaitanya Manovistan Stapitanya Navutale Svayam Rupa Kadamayam Dadadyeva Padamtikam Vandeham Sri Guru Syuttapada Kamalam Sri Gurum Vaishnavam Cha Sri Rupam Sagrahatam Sahagana Raghunatham Vitantam Sajivam Sadvaitam Savadutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Sri Radha Krishna Padam Sahagana Lalita Sri Vishakam Vitancha He Krishna Karuna Sindhu Dinavandhu Shagat Pate Gopisha Gopika Kanta Radha Kanta Namastute Tapta Kanchana Gaurangira de Brindavaneshwari Vrisavanu Sutevi Pranamami Hari Priye Panchakalpa Taruvya Chakripa Sindhubhya Evacha Patitanam Pavanevyo Vaishnavevyo Namo Namaha Jai Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Sri Vasavi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. So we will read one slok from Srimad Bhagavad Gita, second chapter. Bolo. आज हम भगवद गीता का दूसरा अध्याय के ऊपर एक श्लोक पर चर्चा करेंगे। So, text 30, 1-3. दूसरे अध्याय का 13वां श्लोक। Dehinosmin yata dehe Omaram yovanam jara Tatadeham tara prapti Dira tatra damuyati Dehinosmin yata dehe Omaram yovanam jara Tatadeham tara prapti Dira tatra namuyati Dehinosmin yata dehe Omaram yovanam jara Tatadeham tara prapti Dira tatra namuyati. Someone want to read? Translation and purport by His Divine Grace, A.C. Bhaktivedanta Swami Sri Prabhupada, Sri Prabhupada Ki Jai.
as the embodied soul continuously passing this body from youth to old age, the soul, similarly, pass into another body at death, as other person is not bewildered by such a change. जिस प्रकार शरीरधारी आत्मा इस वर्तमान शरीर में बाल्यावस्था से तरुणावस्था में और फिर वृद्धावस्था में निरंतर अग्रसर होता रहता है, उसी प्रकार मृत्यु होने पर आत्मा दूसरे शरीर में चला जाता है। धीर व्यक्ति ऐसे परिवर्तन से मोह को प्राप्त नहीं होता। Yeah, this instruction is basically. ये जो है ये वास्तविकता है। Yeah, everybody must to know that. सभी को पता है। Actually in Kali Yuga, कलयुग में, especially in the Western, that the people don't know about because people don't believe in the transmigration of the soul. खास तौर पर विदेशों में जहाँ पर लोग विश्वास नहीं करते पुनर्जन्म को। And this is a big problem. और ये बहुत बड़ी दिक्कत है वास्तव में। It's necessary to know who I am. ये जानना बहुत आवश्यक है कि मैं हूँ कौन। Other way, everybody is identified with his body. हम सभी को लगता है कि हम ये शरीर ही हैं। And then think, when I die, everything's finished. और जब मेरा ये शरीर खत्म हो जाएगा तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। But this is not like that. The first thing to understand is we are soul, we are no body. This is the first thing to understand. लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये जानना बहुत जरूरी होता है सबसे पहले है कि हम ये शरीर नहीं, हम आत्मा हैं जो कभी मरता नहीं। Other way, because life is what we live now in this body is just one chapter of the life. It's not the life, it's just one chapter. हम जो अभी जीवन व्यतीत कर रहे हैं ये पूरा हमारा जीवन नहीं है, ये हमारे जीवन का एक चैप्टर है, एक पार्ट है। One chapter with this body and after another chapter with another body. अभी का जो पार्ट है, चैप्टर है, वो इस बॉडी से चल रहा है और हमारे जीवन का अगला चैप्टर आएगा तो अगली बॉडी के साथ। So people say, for example, my friend Kumar मर गया. कोई कहता है कि मेरा मित्र था कुमार, वो मर गया। But it's not like that. It's Kumar leave the body and go away. लेकिन ऐसा नहीं है कि कुमार मर गया, कुमार ने वो शरीर त्याग करके वो चला गया। And after that, he by karma he get another body. और वह उस शरीर को त्याग करने के बाद अपने कर्म के अनुसार नए शरीर में प्रवेश करता है। Yeah, and the body can be human or can be animal or can be vegetable or can be aquatic or can be insect also. और उसे जो नया शरीर प्राप्त होगा वो मनुष्य भी हो सकता है, जानवर भी हो सकता है, कोई कीड़ा हो सकता है, कोई पानी में तैरने वाला मछली हो सकता है, कुछ भी शरीर हो सकता है। So when one get a human form, there is three duty to perform, three duties. लेकिन जब विशेष तौर पर ये मनुष्य शरीर मिलता है तो हमारी तीन ड्यूटी होती है। The first duty is spiritual. तो पहली जो हमारी ड्यूटी होती है वो आध्यात्मिक होती है। Second duty, family. और दूसरा जो हमारा कर्तव्य होता है, ड्यूटी यानी कर्तव्य, जो दूसरा कर्तव्य हमारा वो हमारा पारिवारिक जीवन। And the third, social. और तीसरा हमारा कर्तव्य होता है सामाजिक जीवन। So when one get human form, have these responsibilities. तो किसी के पास अगर मनुष्य जीवन है तो उसके पास ये तीन कर्तव्य हैं। Krishna give one human form to serve him. और भगवान ने, कृष्ण ने ये मनुष्य शरीर दिया है उनकी सेवा करने के लिए। It's not to enjoy. और ये शरीर यहाँ वहाँ जाकर के भोग करने के लिए नहीं। The best enjoyment is not for material enjoyment. The best enjoyment you find in the spiritual activities. तो वास्तविक जो आनंद है वो हमको भौतिक कार्यकलापों में नहीं मिलता है, वो जब हम भगवान से रिलेटेड हम जब कार्य करते हैं आध्यात्मिक कार्य तो उसमें आता है। Because the mind is material.
ये जो हमारा मन है, ये मन भी भौतिक है। And in the material level, the mind never will be satisfied. और ये हमारा जो मन है, ये भौतिक चीजें हम कितना ही क्यों ना कर लें, ये कभी भी संतुष्ट नहीं होने वाला। You have one salary and you want something more. हमको जब कोई वेतन, कोई सैलरी हमको प्राप्त होता है, तो हम चाहते हैं कि हमें और प्राप्त हो। And after try to have no one job, try to have two jobs. तो कई बार क्या होता है कि हम एक जॉब के बजाय दूसरी जॉब भी शुरू कर देते हैं। Even like that, your mind will be always not enough to satisfy the mind. तो कभी भी जो पैसा है वो हमें संतुष्ट करता ही नहीं है, हम कितना ही कमा लें। Yeah, because in the material level, the mind is never satisfied. क्यों? क्योंकि जो हमारा मन है वो कभी संतुष्ट नहीं होता है, तो इसलिए हम संतुष्ट। Those who have not house, then want to have one house. जिसके पास कोई घर नहीं है, वो चाहता है कि मेरे पास एक घर हो। And those who have one house, he happen to have three houses, because after the children grown and that. जिसके पास एक या दो घर है, वो चाहता है मेरे पास तीन घर हो। But you need also not one car, you need three cars. जिसके पास अगर एक कार है, तो वो चाहता है मेरे पास तीन कार हो। It's always like the mind is never satisfied. The mind always the mind follow two process. The mind follow two process. जो मन है वो दो कार्यकलाप के पीछे जाता है। Sankalpa vikalpa. संकल्प और विकल्प। I want that. मुझे ये चाहिए, I don't want that. मुझे ये नहीं चाहिए। This is permanently that when the men have 20 years old or when the men have 120, the mind is always in these two process. I want that, I don't want that. और मन ऐसा ही करता रहता है, चाहे कोई व्यक्ति 20 साल का हो, चाहे 120 साल का, उसका मन ऐसा ही करता रहता है कि मुझे ये चाहिए, मुझे ये नहीं चाहिए। So the mind can be satisfied only when the consciousness become purified. तो हमारा मन तभी संतुष्ट होता है जब हमारी चेतना है वो प्योर होती है, शुद्ध होती है। Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram, Hare Hare. More purified is the living entity, more happy is the mind, more satisfied is the mind. जो जीवात्मा है वो जितना ज्यादा अपने आप को शुद्ध करता है, उसका मन उतना ही संतुष्ट होता है और खुश होता है। So it's important to know this basic knowledge. In the second chapter of Bhagavad Gita, we have basic instruction, the base of the instruction. तो जो भगवत गीता का दूसरा अध्याय है, इसके अंदर पूरी भगवत गीता का एक बेसिक सार है। If you understand only one slok of Bhagavad Gita, if you understand only one chapter of Bhagavad Gita, your life changed completely. यदि अगर हम भगवत गीता का कोई एक अध्याय भी समझ ले, एक श्लोक भी समझ ले, तो हमारा जीवन पूरी तरीके से परिवर्तन होता है। Yeah, the knowledge is the cause of liberation. जो ज्ञान है वास्तव में मुक्ति प्रदान करने का कारण ज्ञान ही होता है। Ignorance is the cause of slave. Slave. नहीं तो हम नौकर बने रहते हैं। Yeah. So it's necessary to have some knowledge. तो हमें जरूरी है कि हमें कुछ ज्ञान प्राप्त हो। Actually in Kali Yuga, people don't know he have three duties. तो मनुष्य जीवन प्राप्त तो हो जाता है, लेकिन मनुष्य को पता नहीं होता है कि मेरे तीन कर्तव्य हैं। Spiritual, family and social. आध्यात्मिक कर्तव्य, पारिवारिक कर्तव्य और सामाजिक कर्तव्य। The most of people work for family and social, but don't care so much about spirituality. ज्यादातर जो लोग होते हैं वो अपने पारिवारिक कर्तव्य को निभाने में और अपने सामाजिक कर्तव्य को निभाने में अपना जीवन व्यतीत करते हैं, कभी प्रश्न नहीं करते कि मेरा आध्यात्मिक कर्तव्य क्या है। So this knowledge, everybody must to have this base, must to understand the body. We are not the body, we are soul. We are eternal soul. We are fragment of God.
तो ये जो बेसिक ज्ञान है, बेसिक जो नॉलेज है, ये हमको होना चाहिए कि मैं आत्मा हूँ और मैं भगवान का एक अंश हूँ। So for that Krishna say, as the embodied soul continuously pass in this body from youth to old age, the soul similarly pass into another body at death. A sober person is not bewildered by such change. तो भगवान कृष्ण कहते हैं इस श्लोक में कि जिस प्रकार शरीरधारी आत्मा इस शरीर में बाल्यावस्था से तरुणावस्था में और फिर वृद्धावस्था में निरंतर अग्रसर होता रहता है, उसी प्रकार मृत्यु होने पर आत्मा दूसरे शरीर में चले जाता है। In the purport, Srila Prabhupada writing, since every living entity is an individual soul, each is changing its body every moment, manifesting sometime as child, sometime as youth, and sometime as old men. तो प्रभुपाद तात्पर्य में लिख रहे हैं, प्रत्येक जीव एक विशिष्ट आत्मा है, तो प्रत्येक क्षण अपना शरीर बदलता रहता है, कभी बालक के रूप में, कभी युवा तथा कभी वृद्ध पुरुष के रूप में। Yet the same spirit soul is there and do not undergo any change. तो भी आत्मा वही रहता है जिसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। This individual soul finally changes the body at death and transmigrate to another body, and since it is sure to have another body in the next birth, either material or spiritual, there was no cause for lamentation by Arjuna on account of death, neither for Bhishma nor for Drona, for whom he was so much concerned. यह आत्मा मृत्यु होने पर अंतोगत्वा एक शरीर बदल कर दूसरे शरीर में देहांतरण कर जाता है, और चूंकि अगले जन्म में इसको शरीर मिलना अवश्यंभावी है, चाहे वह शरीर आध्यात्मिक हो या भौतिक, अतः अर्जुन के लिए न तो भीष्म न ही द्रोण के लिए शोक करने का कोई कारण था। Yeah, that means the soul never die. इसका अर्थ यह है कि जो जीवात्मा है, यानी हम, वो कभी भी मरते हैं। You never die. हम लोग कभी नहीं मरते। Yeah, but if you are identified with the body, you will think I die because I saw another people die. But what dies the body is not the soul. लेकिन जब हम अपने आप को शरीर मानते हैं तो हमें लगता है कि हम मरेंगे, क्योंकि हमारे आसपास के सभी लोग मरते हैं। Yeah. सभी शरीर मारे जाते हैं। And we are soul. लेकिन हम तो आत्मा हैं। Yeah. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, Ram Ram, Hare. Rather, he should enjoy for the changing body from old to new one, thereby rejuvenating their energy. Such change of body account by variety of enjoyment or suffering according to one work in life. अभी तो उसे अर्जुन को है, अभी तो उसे प्रसन्न होना चाहिए था कि वह अपने पुराने शरीरों को बदलकर नए शरीर ग्रहण करेंगे और इस तरह वे नई शक्ति प्राप्त करेंगे। So Bhishma and Drona, being noble soul, we are surely going to have a spiritual body in the next life, or at least live in a heavenly body for superior enjoyment of material existence. So in either case, there was no cause of lamentation. क्योंकि भीष्म व द्रोण साधु पुरुष थे, इसलिए अगले जन्म में उन्हें आध्यात्मिक शरीर प्राप्त होंगे, नहीं तो कम से कम उन्हें स्वर्ग में भोग करने के अनुरूप शरीर तो प्राप्त होंगे ही। अतः दोनों ही दशाओं में शोक का कोई कारण ही नहीं। We can approach here this place. You can approach. Yeah. When there is no any more place, we make new temple. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare. Hare Rama, Rama, Hare. महाराज जी कह रहे हैं कि हमें जल्दी से जल्दी नया मंदिर बनाना पड़ेगा, क्योंकि जगह कम पड़ रही है।
Any man who has perfect knowledge of the constitution of the individual soul, the super soul, and nature, both material and spiritual, is called a dhira, or a most sober man. Such a man is never deluded by the change of body. जिस मनुष्य को आत्मा, परमात्मा तथा भौतिक और आध्यात्मिक प्रकृति का पूर्ण ज्ञान होता है, वह धीर कहलाता है। ऐसा मनुष्य कभी भी शरीर परिवर्तन द्वारा ठगा नहीं जाता। The Mayavadi theory of oneness of the spirit soul cannot be entertained on the ground that the spirit soul cannot be cut into pieces as a fragmental portion. आत्मा के एकात्मवाद या मायावादी सिद्धांत मान्य नहीं हो सकता, क्योंकि आत्मा के इस प्रकार विखंडन से परमेश्वर विखंडनीय या परिवर्तनशील हो जाएगा, जो परमात्मा के अपरिवर्तनीय होने के सिद्धांत के विरुद्ध होगा। Such cutting into different individual soul will make the supreme pliable or changeable against the principle of the super soul be unchangeable. तो जो परिवर्तन हो जाएगा, जो परमात्मा के अपरिवर्तनीय होने के सिद्धांत के विरुद्ध होगा। As confirmed in the Gita, the fragmental portion of the Supreme exists eternally, sanatana, and are called kshara. That is, they have a tendency to fall down into material nature. गीता में पुष्टि हुई है कि परमात्मा के खंडों का शाश्वत सनातन अस्तित्व है, जिन्हें क्षर कहा जाता है, अर्थात उनमें भौतिक प्रकृति में गिरने की प्रवृत्ति होती है। These fragmental portions are eternally so, and even after liberation, the individual soul remains the same, fragmental. यह भिन्न अंश नित्य भिन्न रहते हैं, यहाँ तक कि मुक्ति के बाद भी आत्मा जैसे का तैसा भिन्न अंश बना रहता है। But once liberated, he lives an eternal life in bliss and knowledge with the personality of Godhead. किंतु एक बार मुक्त होने के बाद वह श्री भगवान के साथ सच्चिदानंद रूप में रहता है। The theory of reflection can be applied to the super soul who is present in each and every individual body and is known as the Paramatma. परमात्मा पर प्रतिबिंबवाद का सिद्धांत व्यवहित किया जा सकता है, जो प्रत्येक शरीर में विद्यमान रहता है। He is different from the individual living entity. वह जीव से भिन्न होता है। When the sky is reflected in water, the reflection represents both the sun and the moon and the star also. जब आकाश की परछाई जल में पड़ता है, तो प्रतिबिंब में सूर्य, चंद्रमा तथा तारे भी कुछ रहते हैं। The star can be compared to the living entity and the sun or the moon to the Supreme Lord. तारों की तुलना जीवों से तथा सूर्य या चंद्र की परमेश्वर से की जा सकती है। The individual fragmental spirit soul is represented by Arjuna, and the Supreme Soul is the personality of Godhead, Sri Krishna. अंश व्यष्टि अंश आत्मा को अर्जुन के रूप में और परमात्मा को श्री भगवान के रूप में प्रदर्शित किया जा सकता है। They are not in the same level, as it will be apparent in the beginning of the 4th chapter. जैसा कि चतुर्थ अध्याय के प्रारंभ में स्पष्ट है, वे एक ही स्तर पर नहीं होते। If Arjuna is on the same level with Krishna, and Krishna is not superior to Arjuna, then the relationship of instructor and instructed become meaningless. यदि अर्जुन कृष्ण के समान स्तर पर है और कृष्ण अर्जुन से श्रेष्ठ नहीं है, तो उनमें उपदेश तथा उद्दिष्ट का संबंध अर्थहीन होगा। If both of them are deluded by the illusory energy Maya, then there is no need of one being the instructor and the other the instructed.
यदि वे दोनों माया द्वारा मोहित होते हैं तो एक को उपदेशक तथा दूसरे को उपदेश होने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। Such instruction would be useless because in the close of Maya, no one can be an authoritative instructor. ऐसा उपदेश व्यर्थ होगा क्योंकि माया के चंगुल में रहकर कोई भी प्रामाणिक उपदेशक नहीं बन सकता। Under the circumstance, it is admitted that Lord Krishna is the Supreme Lord, superior in position to the living entity, Arjuna, who is forgetful soul deluded by Maya. ऐसी परिस्थितियों में यह मान लिया जाता है कि भगवान कृष्ण परमेश्वर है, जो पद में माया द्वारा विस्मृत अर्जुन रूपी जीव से श्रेष्ठ है। Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. So this change of body is happen only in the material world. तो ये जो शरीर का बदलना है, परिवर्तन होना है, ये केवल इस भौतिक संसार में ही होता है। The material world is the jail of Durga. तो ये भौतिक संसार एक जेल है, जिसकी जो जेलर है वो दुर्गा माता है। And now we try to purify our conscience because we want to go out of the jail of Durga. तो हमें चाहिए कि हम अपनी चेतना को शुद्ध करें ताकि हम दुर्गा माता के जेल से बाहर निकल सकें। In the spiritual world there is no change of body, nobody margea, nobody die. तो आध्यात्मिक संसार के अंदर कभी भी शरीर परिवर्तन नहीं होता है, वहाँ कभी भी मरना नहीं होता है। There everything is eternal in Vaikunta. वहाँ हर एक वस्तु जो है वो शाश्वत होता है, उसका कभी अंत नहीं होता। Vaikunta means without anxiety. उस धाम को वैकुंठ कहते हैं। वैकुंठ मतलब होता है जहाँ कोई भी तकलीफ नहीं है। There is everything Sat Chit Ananda. वहाँ पर हर एक वस्तु सच्चिद आनंद है। Sat means eternity. सत का मतलब होता है शाश्वत। No anybody die. कोई वहाँ पर मरता नहीं, कोई भी वस्तु। Chit means perfect knowledge. चित का मतलब होता है परफेक्ट ज्ञान। Satchit Ananda. Ananda is eternal bliss. और आनंद मतलब होता है परम आनंद, जो आनंद कभी समाप्त नहीं होने वाला। This is the characteristic in Vaikunta. और ये सब जो बातें हैं ये वैकुंठ लोक में पाई। But here in the jail of Durga is completely opposite. और यहाँ पर इस भौतिक संसार में जेल में पूरा उस संसार का उल्टा है। The spiritual world is Sat, eternally. And here is everything is temporary. It's completely opposite. और आध्यात्मिक संसार में हर चीज सत होता है, शाश्वत होता है, और इस संसार में असत होता है। हर चीज का कुछ ना कुछ अंत होता है कभी ना कभी। The spiritual world, Chit means perfect knowledge. Everybody has perfect knowledge. आध्यात्मिक जगत में हर एक के पास बिल्कुल पूर्ण ज्ञान होता है। But here in the material world is opposite. It's ignorance. और यहाँ पर पूरा There is knowledge, here is ignorance. There is eternal, here is temporary. और यहाँ पर उसका पूरा उल्टा है। वहाँ पर सब विद्वान है और यहाँ पर सब लोग मूर्ख की श्रेणी में आते हैं। There is अज्ञानी। eternal happiness. वहाँ पर कभी न खत्म होने वाला आनंद है। And here is suffering. और यहाँ पर कभी न खत्म होने वाले कष्ट। Adhyatmika klesha, adhibhautika klesha, adhidaivika klesha. आदि आत्मिक क्लेश, आदि भौतिक क्लेश और आदि दैविक क्लेश। Yeah, it's always difficulties. हमेशा यहाँ पर कष्ट और दिक्कत होती है। Even the rich person gets sometimes some problems. Some people think if I become rich, I have no any more problem, but it's not like that. हमको लगता है कि जब हम बहुत अमीर हो जाएंगे तो हमारे पास कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। We must to become rich in knowledge. हमें अमीर होना चाहिए ज्ञान में। When we become rich in knowledge, we become dhira. Here say dhira tatra namuyati. जब हम ज्ञान में ज्ञान अर्जन कर लेंगे बहुत सारा, तो हम धीर बन जाएंगे। Is no anymore disturbed. तो धीर व्यक्ति को कुछ भी चीज परेशान नहीं कर पाती।
Srila Prabhupada got sometimes some physical problem. श्रील प्रभुपाद जो थे उन्हें भी कभी कभी शारीरिक तकलीफ होती थी And the disciples then say, Prabhupada, we bring you to the hospital. और उनके शिष्यों ने कहते थे प्रभुपाद हम आपको हॉस्पिटल लेकर के जाते हैं And Srila Prabhupada was not so enthusiastic too, because he don't believe in so much in the service of the hospital. तो लेकिन प्रभुपाद कभी भी हॉस्पिटल जाना नहीं चाहते थे उन्हें वो सब चीजें दिक्कत देती नहीं थी वहाँ But the young devotees insisted, Prabhupada, you must to come. And he went to the hospital. तो जो जवान जो शिष्य थे श्रील प्रभुपाद के वो हमेशा उन्हें ठीक कराने के लिए प्रयास करना चाहते थे But he was in a transcendental level. लेकिन श्रील प्रभुपाद जो है वो एक दिव्य स्तर पर थे Atmani means pure soul. आत्मनि यानी कि बिल्कुल शुद्ध आत्मा Yeah. And one time also, he don't like the system in the hospital there. And in one moment he say for the disciple, listen, bring me back to the temple. एक बार श्रील प्रभु तो हॉस्पिटल में चले भी गए थे लेकिन वहाँ पर उन्हें जाकर के वहाँ पर कोई सिस्टम ठीक नहीं लगा तो उन्होंने अपने शिष्यों से कहा कि मुझे फिर से यहाँ से ले चलो And the doctor in the hospital say, you cannot go. डॉक्टर्स कहने लगे श्रील प्रभुपाद को कि आप यहाँ से नहीं जा सकते If you want to go to leave the hospital like that, you must to sign. यदि आपको इस हॉस्पिटल से जाना है तो आपको यहाँ पर साइन करना होगा Prabhupada say, okay, I sign, no problem. प्रभुपाद बोले लाइए मैं साइन कर ही देता हूँ Yeah, and he say, what I need is light of sun and massage. श्री प्रभुपाद कहते थे कि क्या जरूरत है इतनी सारी लाइट लगाने की और इतना सारा मसाज करने की So one disciple say, I have one place in the border of the sea, one house, you can come there. तो श्रील प्रभुपाद ने अपने शिष्य को एक बार आमंत्रित किया And he was there every day, take sun and take massage. तो श्रील प्रभुपाद वहाँ पर जाकर के खुले में धूप की रोशनी उन्होंने प्राप्त की और वहाँ पर अपने शिष्यों से कुछ मसाज लिया And after some time he got good health. और उसी से कुछ समय बाद में श्रील प्रभुपाद एकदम तंदुरुस्त हो गए It's necessary sometime to go to the hospital. Also me, I got this experience. तो कभी-कभी हॉस्पिटल जाना आवश्यक भी होता है But the Atmani, the pure devotee, is another level. लेकिन जो शुद्ध आत्मा होती है वो बिल्कुल अलग स्तर पे होती है So in the material world, there is people become contaminated by material consciousness. तो इस पूरे संसार में जितने भी जीवात्मा हैं उन सभी का बुद्धि अज्ञान से भर गया है क्योंकि ये संसार अज्ञान से The consciousness must to be spiritual. तो हमारी जो चेतना होनी चाहिए वो हमेशा आध्यात्मिक होनी चाहिए For that, Srila Prabhupada founded International Society for Krishna Consciousness. तो उसी के लिए श्रील प्रभुपाद ने ये सोसाइटी बनाया इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस Because the consciousness is the really identity of everyone. क्यों क्योंकि जो चेतना है वास्तव में चेतना ही हमारी असली पहचान है So by material consciousness, people become more and more contaminated. तो भौतिक चेतना से हर एक मनुष्य और ज्यादा से ज्यादा अशुद्ध होते जा रहा है So when they leave the body, then must to take another body because they are not pure. तो उन्हें वो शुद्ध नहीं हो पा रहा है इसलिए जब वो इस शरीर को त्यागेंगे तो उन्हें दूसरा शरीर धारण करना ही पड़ेगा To go back to the spiritual world is necessary to be pure. तो आध्यात्मिक जगत में प्रवेश करने के लिए हमें अपने चेतना को सबसे पहले शुद्ध बनाना पड़ेगा For that we chant every day from 5:30 in the morning we chant Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, Ram Ram, Hare. We chanting every day to purify our consciousness. तो हम अपने आप को शुद्ध करने के लिए इसी कारण रोज भगवान के नामों का जप करते हैं सुबह करते हैं और डेली हम
जब करते हैं भगवान के नाम। Also, envy contaminates the living entity. Envy. जो ईर्ष्या है, जो द्वेष है, ये सब जो है हमको जीवात्माओं को कंटामिनेट करते हैं, अशुद्ध बनाते हैं। How do you say envy in Hindi? Envy. How do you say? Eh? Yeah. By envy also the living entity become more and more contaminated. And there is many people do things by envy. तो ईर्ष्या से प्रेरित होकर कई सारे कार्य हम लोग करते हैं। Then have difficulty to accept the other is in better position. Then when you feel envy, you have difficulty to accept that the other people is in better consciousness, in better position. जब हमें ईर्ष्या होती है तो हम किसी और व्यक्ति अगर अच्छी पोजीशन पे है तो हमें वो सहन नहीं होता। So envy contaminate the living entity. तो ये ईर्ष्या जो है हम सब जीवात्माओं को अशुद्ध बनाती है। Also attachment. जो आसक्ति है, attachment contaminate the living person. और दूसरा जो जीवात्माओं को अशुद्ध बनाता है वो है आसक्ति। And attachment is the tendency of the soul. और लेकिन ये जो आसक्ति है ना, ये ही जीवात्मा के स्वाभाविक एक स्वभाव है जीवात्मा। Yeah, the soul become attached. When the soul is in Maya, when the soul is covered by Maya, become attached for that and that and that. Attachment. जब जीव की चेतना माया से आवृत होती है तो वो हर चीज से आसक्त होता है। मैं इससे आसक्त हो जाऊं, उससे आसक्त हो, हर चीज से वो आसक्त हो जाता है। And the attachment contaminate the living entity. और ये आसक्ति अशुद्ध बनाती रहती है जीवात्मा। It's very strong, the attachment, very strong. और ये जो आसक्ति है ये बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली है। Yeah, one can become attached for anything. हर व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति किसी भी चीज के लिए आसक्त हो सकता है। Srila Prabhupada one time he showed for devotee, there was one place where every night one bird came to sleep in this branch, one branch of trees, and there every day one bird come to sleep in the same branch, in the same place. Srila Prabhupada showed for the devotees, there in this branch, every day, every night coming one bird to sleep in the same place. तो श्रील प्रभुपाद बता रहे थे एक बार कि एक ब्रांच के अंदर एक पेड़ की शाखा के ऊपर एक चिड़िया जो है वो हमेशा आकर के सोती है। How is possible if there is so many trees and every tree is so many branches, but the bird come, this bird come every night in the same place? तो बहुत सारे पेड़ हैं, उनके ऊपर बहुत सारी शाखाएं हैं, लेकिन वो जो चिड़िया है वो आती है और वो एक ही पर्टिकुलर शाखा के ऊपर बैठती है और सोती है। Yeah. So Srila Prabhupada explained, he is attached with this place. He get attachment. तो श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि उस चिड़िया को उस जो शाखा है उससे आसक्ति हो गया। And Srila Prabhupada with the stick, he indicate the place. Why he understood the bird come every night. He indicate with the stick because there was one area plenty stool of bird. So he understood the bird come every night in the same place, and at night he pass a stool, and by see the stool, Prabhupada understood. He said, "This bird come every night in the same place." श्रील प्रभुपाद को ये पता कैसे चला कि श्रील प्रभुपाद ने दर्शाया एक लकड़ी दिखा करके दर्शाया है कि वो चिड़िया हमेशा इसी पेड़ की शाखा पे आती है क्योंकि वो हमेशा अपना जो मल है वो त्याग करती है। उसके नीचे उस चिड़िया का
कई बार उसने मल त्याग किया तो उसके प्रभुपाद ने इस तरह से दर्शाया। The bird don't go to sleep in another place? Because he's attached. तो वो चिड़िया कहीं और क्यों नहीं जाती? क्योंकि वो उसी जगह से आसक्त हो गई। Yeah, and we also become attached. तो हम सब लोग भी कई सारी चीजों से अटैच हो चुके हैं। Yeah, for some people it's difficult to leave the house. तो हम सभी लोगों के लिए बहुत ही मुश्किल होता है घर को छोड़ना। Because after 10 years, 30 years, 50 years in one place, it's difficult to leave the place. तो 10 साल बाद, 20 साल बाद या 30 साल बाद अगर वो उस जगह पे रहा है तो उसे वो कभी छोड़ना नहीं चाहता। I and my, this is the concept. I and my. मैं और मेरा, Yeah. यही कंसेप्ट पे सभी का जीवन चल रहा है, मैं और ये मेरा। They don't think this is Krishna propriety. He says, this is my. वो कभी नहीं सोचते कि मुझे ये जो वस्तु प्राप्त हुई है, मुझे भगवान की दया से, कृष्ण से प्राप्त हुई है। वो कहता है कि ये मेरा है और मैं हूँ और मेरा है। So by attachment we become more and more contaminated. तो इस आसक्ति से हम और अशुद्ध होते जाते हैं। In the all nice houses in India or also in Europe, this kind of old and big house, sometimes there is 1, 2, 3 ghosts. तो भारत में और पाश्चात्य देशों में भी बड़े-बड़े घरों के अंदर कभी-कभी भूत पाए जाते हैं। Some live in this house for one life, and in one moment he die, but he don't want. In the last moment he think, who will take care of this house? तो वो भूत क्यों बनते हैं? क्यों? क्योंकि वो जब वो कई समय से उस घर में रह रहे थे और जब उनकी मृत्यु आई तो वो सोचने लगे, अरे मेरा घर, अरे मेरे घर का क्या होगा? तो फिर वो उसी घर के अंदर भूत बन जाते हैं। So he don't want to die because he don't want to leave the house. He don't want to leave the body, he don't want to leave the house because he is attached. तो उसकी मृत्यु के समय तक भी उसे मनुष्य को जब वो आसक्त रहता है अपने घर से तो वो उसी जगह पर रह जाता है, भूत बनता है। Yeah. So you cannot overcome the law. तो लेकिन हम कभी जो नियम है, नियम का हम तोड़ नहीं सकते। So even if he is attached, he leave the house. He leave the body. And he leave the body, and by attachment, he stay in the house for 100, 200 years like ghost. लेकिन आसक्ति के कारण 100-200 साल तक भी उस व्यक्ति को, किसी व्यक्ति को भूत बनकर उसी घर में रहना पड़ता है। So the house is the son of the people who leave the body. The son, he take possession of the house. जो घर उसने बनाया है उसका जो पोजीशन है, जो उसका मालिकाना हक है, उसका बेटा ले लेता है। After 70 years, he have to leave the body. और 70 साल बाद उस बेटे को भी शरीर त्याग करना पड़ता है। But he's here in the same situation of the father. He think, who will take care of this house if I वो die? जो पुत्र होता है उसका, वो भी मरते दम तक यही सोचता रहता है कि मृत्यु के समय कि इस घर का अब क्या होगा इसका। So by attachment, when he leave the body, he stayed like ghost in the house. जब वो भी मृत्यु के समय तक अगर इस चेतना में रहता है तो वो भी अपने पिता की तरह भूत बनकर उस घर में रहता है। In this big house, I got experience in Europe. Sometime I got experience with ghost. In this old house, sometimes it's 2, 3 ghosts, the same family. तो महाराज बता रहे हैं कि यूरोप के अंदर महाराज जब गए तो यूरोप के अंदर महाराज ने देखा कि एक बहुत बड़ा घर है और वहाँ पर 2-3 भूत रहते हैं एक ही परिवार के। Yeah, and the ghost suffering. The situation of the ghost is terrible. तो बहुत भूत की जो स्थिति होती है वो बहुत ही ज़्यादा दयनीय होती है, बहुत ही ज़्यादा कष्टों भरी होती है। Because the ghost is made by subtle bodies, the mind, intelligence, and ego. This is
the ghost. क्योंकि भूत का जो शरीर होता है वो हमारे जैसा शरीर नहीं होता, उसके पास केवल मन, बुद्धि और अहंकार का शरीर होता है। But he have no gross body. उसके पास हमारे जैसी हड्डी मांस वाली शरीर नहीं होता है। So because he is also mind, the mind want to eat. The mind see some food and the mind want to eat. लेकिन उसके पास मन होता है और मन को किसी चीज को देखता है तो उसे प्राप्त करना चाहता है, उससे कोई खाने का दिखता है तो खाना चाहता है। Yeah, the mind desire. मन जो है वो निर्णय करता है कि मुझे इस वस्तु को खाना है। But he cannot eat because he have no mouth, he have no body. लेकिन वो उसे खा नहीं पाता क्योंकि उसके पास मुंह नहीं है, उसके पास शरीर ही नहीं, वो खा नहीं पाता है। For that sometime in the old house where there is some ghost, at night you hear the noises with the pot in the kitchen because the ghost look for some food. Yeah. तो रात्रि में जब भूत बंगले के अंदर रात्रि में आप अगर सुनेंगे आवाज, तो जो भूत वगैरह होता है वो किचन के अंदर जाकर के खाना ढूंढ रहे होते हैं, लेकिन उन्हें मिलता कुछ नहीं है, खा नहीं पाते। Yeah. So by attachment become contaminated. तो आसक्ति से जो है हम लोग अशुद्ध बनते हैं। One cannot go back to Vaikuntha with attachment, with material attachment. अगर हमें इस भौतिक संसार में कुछ भी आसक्तियां हैं तो हम वैकुंठ लोग कभी प्राप्त नहीं कर सकते। So the solution is to be we cannot cancel, we cannot delete the attachment. We cannot delete because it's the tendency of the soul. क्योंकि जो आसक्ति है ये जीवात्मा का स्वभाव है, इसलिए हम इस आसक्ति को कभी हटा नहीं सकते, कभी नहीं हटा सकते। Yeah. Raghunath Bhareva Subhadra ki jai. I forget what I say. We cannot cancel the attachment. Yeah, you cannot delete. You cannot cancel, no. तो हम आसक्ति को कभी हटा नहीं सकते क्योंकि वह स्वभाव है जीवात्मा का। So what is the solution? तो फिर समाधान क्या है? Become attached with Radha and Krishna. तो समाधान एक ही है, हमें आसक्त हो जाना है भगवान श्री कृष्ण से और श्रीमती राधा। Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Thank you for your attention. Thank you for your attention. तो महाराज सभी को धन्यवाद दे रहे हैं, आप सबने एकाग्रता से प्रवचन को सुना। There is some question. किसी का कोई प्रश्न है, कोई जिज्ञासा है तो महाराज से पूछ सकते हैं। कोई भी प्रश्न किसी का पूछ सकते हैं। No question, I chant. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jaya Jaya Prabhupada, 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 Jaya Jaya Prabhupada. Srimad Bhagavad Gita ki Jai, Srila Prabhupada ki Jai, Jai Gaur Premanande.